24। सर, ये जो अग्निपथ स्कीम है, 4 साल के लिए युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि 4 साल के बाद जब युवा घर जाएंगे उन्हें रेडिकलाइज करना आसान होगा, गलत राह में जा सकते हैं? No, you see, the Agnipath scheme is for four years. What you said is correct. It's limited only for 4 years. But I do not think that they will go back और वो कोई गलत काम करेंगे, क्योंकि फौज में सबसे पहले लोग फौज क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ अपने देश के लिए कुछ करें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि कोई भी यंग लड़का 17 साल, 18 साल, 19 साल का जब ज्वाइन करता है और उसके बाद जो ट्रेनिंग हमारे पास होता है और 3-4 साल जब वो रहेगा हमारे साथ, तो जो मिलिट्री का ईथॉस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जो ईथॉस है, वो उसमें आ जाएगा। सो आई डोंट थिंक कि वो 4 साल के बाद जब बाहर सिविल स्ट्रीट में जाएगा तो कोई गड़बड़ करेगा। इन फैक्ट मैं सोचता हूँ कि ही विल बी अ मच बेटर सिटीजन। सो फॉर द सिविल साइड आई थिंक इट्स अ रियली गुड प्रोपोजिशन कि 4 साल फौज में रहने के बाद अगर वो वापस सिविल स्ट्रीट में जाए। साहब, मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं न्यूज़ 18 इंडिया से हूँ। मेरा सवाल ये है कि फौज में, एयरफोर्स में, नेवी में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो हैं वो ज़्यादा भर्ती होते हैं। सिपाही रैंक के लिए ज़्यादा भर्ती गांव के लोग जाते हैं। इसमें अगर उन लोगों की रोजी रोटी इसी पर निर्भर होती है कि घर से 1-2 बंदा फौज में गया है, नेवी में गया, एयरफोर्स में गया, थल सेना में कहीं भी वो जाता है, तो पूरा परिवार उस पर निर्भर होता है। अधिकांश जम्मू कश्मीर की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो फौज में जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। उनकी रोजी रोटी इसी पर होती है। अब ये 4 साल का जो कर दिया गया है, उनके लिए एक नया संकट होगा, परिवारों के लिए भी और नई जो जूथ है उसके लिए। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि उनके परिवार के लिए या कुछ ये प्रॉब्लम होगा। मैं तो एयरफोर्स के बारे में ज़रूर बोल सकता हूँ कि हमारा एयरफोर्स काफ़ी चेंज हो रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एयरफोर्स हो रहा है, जहाँ पे हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आजकल के जो फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी क्विकली अब्जॉर्ब कर पाए। और मैंने खुद देखा है कि हमारे जैसे जो काफ़ी सीनियर हैं और जब हम जूनियर ऑफिसर्स या एयरमैन से कंपेयर करते हैं, उनका एबिलिटी टू अब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी इज़ मच फास्टर। सो देयरफॉर इस अग्निपथ स्कीम से क्या होगा कि कुछ सालों में हमारा जो the average age of an airman in the Air Force will come down. That means the younger generation are more capable of absorbing the new technology, which is changing very rapidly. It changes by the day, changes by the year. और जब 4 साल के बाद ये जब बाहर जाएंगे, they will still be young. They'll be around 25 years or even younger. So they would have been trained in all these modern technologies, and they'll be fitter people to get good jobs outside. So I specifically Air Force के बारे में अगर पूछ रहे हो तो I think it will not really affect anybody that much. Check. Yeah, hi sir. Myself Sunil Bhatt from the India Today group. Sir, ever since this scheme was announced, there is a debate that has begun across the nation. While there are, unemployed youth, who are, looking at this scheme with great hope. But there are ex-servicemen who have expressed reservations as far as this scheme is concerned. I will just quote Lieutenant General Vinod Bhatia, former DGMO. Sir, he has said that tour of duty not tested, no pilot project, state implementation will also lead to militarization of the society,
nearly 40,000 of the youth year on year back, rejected and dejected without a job, semi-trained in arms, ex-agniveers, not a good idea, no one gains. And besides that, he has also said that I don't think that it's going to, enhance the combat effectiveness of the armed forces. So what would you say as far as his, comments are concerned? Okay. Everybody has a right to make their own comments. In any issue, when there is a change in life in general, there is always going to be some hiccups. हलचल तो होगा ही जब भी हम कुछ change करते हैं. But I'm sure you all agree with me that there is only one constant in life and that is change. And even ये जो अग्निपथ scheme है, it is not something which is suddenly come out of the blue. हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के सीनियर ऑफिसर्स, वेरी मैनी पीपल, दे हैव बीन डिस्कसिंग दिस 1 साल से ऊपर, शायद 2 साल तक, और उसको फाइनली गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है एंड दे हैव सेड यस इट्स अ गुड आइडिया, व्हाई डोंट वी इम्प्लीमेंट इट. ऑफ कोर्स कोई भी स्कीम में प्रोज एंड कॉन्स तो होगा ही ज़रूर. सो वी हैव टेकन ऑल दीज कॉन्स, वी हैव कंसिडर्ड ऑल दैट, बट वी फील ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल स्कीम which will help the services in the long run. And जो मैंने पहले बोला था that this worry कि आपने लोगों को ट्रेन करके 4 साल के बाद वो they might become as what you said, I do not agree to that. I think they'll be better citizens, they'll be more responsible citizens, and they'll be more aware citizens, and they will do much better for the country. Sir, finally, now my question is related to women representation of the women are easily trying to join the services, but it's very hard for them to join them. So, is there any criteria set up for the women representation in AGNIPATH scheme? Okay. In the Air Force, we were among the first to induct women into the Air Force. And right now, our percentage of women officers are quite high. Now, AGNIPATH is a new scheme. So, when the thought process of inducting women even into as Agniveers has already come into the Air Force, and I'm sure that sooner rather than later they may come in, because we have to study all issues involved. Like I think the Army has made a beginning, the Navy has made a beginning. I'm sure we would also go that way. So, because in that sense, we are quite a gender neutral service. But inducting them before having the infrastructure in place or having the right, may be too early. But I'm sure it will happen in due course. सर पंकज खजुरिया ग्रेटर जम्मू. सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, जिस तरीके से मेरे कुलीग ने मेंशन किया जनरल भाटिया को, मैं जनरल वीपी सिंह की बात कर लूँ या इसके साथ साथ मैं किसी और जनरल की बात करूँ, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई पायलट सर्वे नहीं हुआ. तो इज़ देयर एनी रीज़न कि 4 साल ही स्कीम को लिमिटेड किया गया है, 5 साल 6 साल नहीं? और इसके साथ साथ जो एवरेज सर्विसेज है आर्म्ड फोर्सेस की वो 32 ईयर्स है, जो कम करके 24 से 26 साल कर दी गई, वो 20 साल क्यों नहीं की गई? इसमें कोई पर्टिकुलर रीज़न जो हो कि सिर्फ 24 और 26 किया गया? नो, देखिए अभी 20 साल तो बहुत ही कम होता है. सी दिस एज क्राइटेरिया जो है, इट इज़ इवन हमारे एयरफोर्स स्टेशन आप अगर जाएंगे तो यू विल फाइंड इट इज़ द यंग गाइज हु डू द रियल फाइटिंग और द रियल वर्क. सो द यंगर द एज प्रोफाइल दैट वी हैव, द बेटर इट इज़. और आप लोग ये भूल रहे हैं कि हमारे देश में इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज इज द लार्ज एज ब्रैकेट यंग पीपल दैट वी हैव. सो इससे क्या फ़ायदा होगा अगर आप हर 4 साल 75% रोटेट कर रहे हो, तो मोर यूथ विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द आर्मी, एयरफोर्स और द नेवी. और 4 साल आप अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर आ जाए, यू इम्बाइब द करेक्ट इथॉस, जो डिसिप्लिन, द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द वे ऑफ वर्क. एंड इफ दीज पीपल व्हेन दे जब बाहर जाते हैं सिविल स्ट्रीट में, और वो भी एंड ड्यूरिंग दोज 4 years दे आर अर्निंग, सिर्फ पढ़ाई या ये नहीं कर रहे हैं, दे आर अर्निंग ऑल्सो एट गुड रेट. सो आई थिंक दे विल बी
an asset to the nation, not otherwise. Good morning, sir. I am Vishal from UNI News Agency. So my question is that in 4 years period, sir, how aggressively the youth will be motivated towards the armed forces or the Indian Air Force? Secondly, sir, what criteria will be adopted to absorb 25% of the youth after the period of 4 years for regular basis cadre, what I have come across, sir? Yeah, I think this was a question which was debated whether when you induct somebody for 4 years, will he have the high morale? Will he be motivated? I have no doubts because from what I see, जब भी हमारे जो रैलीज होते हैं, जब भी हम एयरफोर्स में इंडक्शन करने जाते हैं, हर एक वैकेंसी के लिए 100, 200, 300 लोग आते हैं. मतलब मोटिवेशन लेवल्स कभी हमने कम नहीं देखा है. और आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाके देखिए, द यंगस्टर्स हु जॉइन, they just have to be given the correct direction. And I'm sure they are not thinking कि 1 साल की बात है या 10 साल की बात है या 20 साल की बात है. If they are given the correct direction, by whom? By the officers, by the supervisors, by the leadership. If the leadership is good, they will turn out to be good, whether they are here for 2 years, 4 years, or 10 years. And let me tell you, from the young officers I've seen, from our warrant ranks that I've seen, from our senior sergeants I've seen, I have full confidence that we have the right leadership in place to guide these youngsters. And आप देखिए, whether it is Kargil war or go back to world wars, the soldiers who really performed were with hardly any service, 3, 4, 5, maybe 6 years service. But they did not say कि हम तो इतने साल के हैं कि हम आगे क्यों जाएं. तो आई हैव नो डाउट, अगर फौज भर्ती हो रहा है देश के नाम से, वो 2 साल हो या 3 साल हो, वो करेगा जो करना है. Yeah, that is an important question because ये 4 साल के बाद, of course they have to volunteer. कुछ ऐसे लोग होंगे जो they are waiting for this opportunity कि 4 साल हमें फौज का ट्रेनिंग मिल जाए and we get well trained and they can start a new life. So, but out of that, many people would want to continue in service. So our endeavor will be to retain the best. So which is why this scheme is very good for us, because the 25% that we hope to retain will definitely be the best among the lot. So इसके लिए what you're saying is right, and already I think work has started that how should we change the present assessment system so that it is transparent, so that everybody knows how he's performing, and galti se not the wrong person comes up. So on. Now they are trying to slash it by providing the part-time job. So how you are going to respond to those politicians regarding this? One. The second question is that in Jammu Kashmir we see that normally the youngsters of age of 17 to 21, they are being indoctrinated, brainwashed, live to that culture. So how do you see that this AGNIPATH is really going to flood that thing and give them the right disha and direction? See, I can only speak from the Air Force point of view. I cannot speak from those people who have other interests. So from that, like I brought out, 4 years. See, what does a young man look forward to? Some young people, because of compulsions, as they finish their 10th or 12th, they are looking for a job straight away. Some people are looking to gain more education, correct? And after getting educated, go into a better job. So if you join as an Agniveer, what will happen? First of all, you are trained well. I'm sure you'll agree with me that our armed forces is one of the better armed forces in the world, and our training standards are one of the best in the world. So for these 4 years that he's going to be with us, he's going to be trained in terms of whether it's discipline,
fitness levels, the way of thinking, his attitude to do work, integrity, his patriotism for the nation. All these factors you add on. Number two, while he is undergoing all this, he is earning a living. He's earning a good living. The initial package is, as has been told to you, is 30,000, which will rise to 40,000 by the time he leaves. And at the same time, he's also being trained. Like, let's say he comes to the Air Force. He's being trained on systems for which, when he leaves at 4 years, he will also be given credit points. And already, I'm told, काफ़ी ministries, काफ़ी private sector people also, they are already thinking in terms of how to utilize this good force who are leaving Fauj after 4 years and induct them into jobs outside. So I think that's the way it'll go. See, like I said, there are two sides to any coin, and there will be pros, there will be cons. Actually, criticisms are welcome because it'll, and this is a new scheme which has been rolled out, and I'm sure as it moves forward, there could be minor changes here and there. It's possible. So I'm not saying what they're saying is wrong, but I'm saying what I think is right. So I leave it at that. Whether it will stop radicalization or not, I cannot answer now till the scheme is implemented, and only time will tell us that. But I'm quite sure that if a youngster who has, as you said, has been brainwashed, if he were to join the services and spend 4 years with us, when he leaves Fauj after 4 years, I'm sure he'll be a different person and probably more of an Indian than a radical, as you brought out. Can we move to the next question, please? We should give the left side also some chance, yes. Myself, विकास रबुलाम सहारा से मैं। हाँ जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि आप जितने भी बच्चे आगे आएंगे उनसे 25% को आप जो बेस्ट होंगे उनको ले जाएंगे। सर मैं ये सोचता हूँ कि आपके जो ऑफिस ट्रेनिंग देंगे, जैसे लीडरशिप में काम करेंगे, वो 100 के 100% बच्चे जो हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे। तो फिर हम 25% क्राइटेरिया लेके क्यों चल रहे हैं? बिकॉज हमारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आर्मी में, एयरफोर्स में, सामने। तो क्या कुछ ऐसा ना किया जाए ताकि जो बेस्ट हो, कोई ऐसा क्राइटेरिया रखा जाए उसके ऊपर जितने भी आए उन सबको ही ले लिया जाए, ना ही 25% खाली लिया जाए? थैंक यू। देखिए, अभी ये नई स्कीम है, अग्निपथ इज अ न्यू स्कीम. So based on various considerations, which I was not a part of, but lot of very senior officers from Army, Air Force, Navy मिल के काफ़ी सोच समझ के ये स्कीम निकाले हैं. तो आगे चेंजेस होगा या नहीं, हम नहीं अभी नहीं कह पाएंगे. आप जो कह रहे हैं कि यू आर राइट कि अभी भी फौज में हम देखते हैं कि मुश्किल से लोग ज्वाइन करते हैं. एक वैकेंसी के लिए इतने लोग अप्लाई करते हैं. यस, सो दे आर ऑल गुड. बट वंस दे ज्वाइन करने के बाद हम देखते हैं कई ऐसे होते हैं जिनका एप्टीट्यूड किसी, स्पेशली एयरफोर्स में जहाँ पे काफ़ी टेक्निकल, ज़्यादातर मतलब टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, तो किसी का एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है. तो हम तो वही चाहेंगे ना कि जिसका एप्टीट्यूड ज़्यादा हो, जो आगे, बिकॉज आगे का टेक्नोलॉजी विल बी इवन मोर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, जो कर पाए तो हम उन्हीं को रिटेन करना चाहेंगे. एंड आई एम श्योर इन लेटर टाइम्स अगर कोई शॉर्टेज पड़ गया तो मे बी द गवर्नमेंट विल हेल्प अस आउट. दैट कैन नॉट बी सेड नाउ. सर माई सेल्फ इज अजय मीनिया, आई एम फ्रॉम अमूर जाला. सर मैं ये जानना चाहता था कि जम्मू कश्मीर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहेगा? नंबर ऑफ वैकेंसीज सर, कितने लोगों को यहाँ पे हम अपनी फील्ड में शामिल करें? ओके, ये स्कीम है ऑल इंडिया ओपन स्कीम, मतलब ऑल इंडिया ऑल सर्विस. मतलब वी वुड वांट एवरी यूथ फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू जॉइन द स्कीम. तो मेरे समझ में तो ये है कि किसी एरिया के लिए कोई रिजर्वेशंस या
इम्पोर्टेंस नहीं होगा. इट बी एन ओपन स्कीम, इट बी अ ट्रांसपेरेंट स्कीम. आप JNK में हो या केरल में हो या आसाम में हो या गुजरात में हो, यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी. सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है. सर यहाँ पे योगेश हूँ KNO से. जैसे कि आपने स्कीम के बारे में बताया और ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट होगी, तो क्या जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में फौज में एंट्री का लेवल अब एंट्री का स्टार्ट पॉइंट यही रहेगा, या जो रेगुलर रिक्रूटमेंट रैलीज होती थी या जिस तरह से ये सारा प्रकरण चलता था वो भी रहेगा इसके साथ? नहीं, अभी ये नया स्कीम आ गया है तो हेंस फोर्थ यही स्कीम रहेगा. वी विल, इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज टू डिफरेंट स्कीम्स. सो अभी से दैट इज व्हाई इट एंट्री वाज के लिए यही एक रास्ता रहेगा बस फॉर ऑल थ्री सर्विसेज. Do you have any more questions from this side? सर, जम्मू कश्मीर के युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस स्कीम के रिलेटेड? आई मीन, मैं तो यही कहूँगा कि इफ़ यू हैव नो अदर लुकआउट इन लाइफ, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आपको मिल रहा है. अप्लाई करो, ट्राई करो, एंड ट्राई एंड जॉइन द एयरफोर्स फॉर 4 years. When you come out after 4 years, or after 4 years, if you want to stay back in the Air Force and you're found fit to stay back, so much the better. But if you come out after 4 years, you will be a better person for the civil street. And जिस तरह आत्मनिर्भरता वगैरह हो रहा है, and even in the Air Force, a high percentage of indigenization जो हो रहा है. So a lot of companies are now being established in India, which are also working towards, whether it's aircraft, whether it's radars, whether so many issues that we have in the Air Force. So there'll be a lot of opportunities for these youngsters when they leave. They have a very solid base. When they leave, their शायद presentation में बताया होगा कि 10 लाख या कुछ मिलते हैं, so that they have something to hold on before they start their new life. And they are so young. They'll be just 24, 25 at best. I think it'll be a great stepping stone for them too. तो मैं तो सबको यही बोलूँगा कि आप ज्वाइन करें and you learn the ethos of the military and become a better citizen for the country. तो ये अभी now that this scheme has started, और आपको पता ही है पिछले शायद 1.5 साल से एंट्री हुआ नहीं है because of very many issues, and that is why lot of discussions, lot of, जैसे आप किसी ने कहा कि criticism है, तो all these points were considered and finally जो this will be the new scheme. So yeah, अब यही चलेगा. This will be the scheme for all 3 services. Can we have one last question, if any? Or should we close? So, thank you very much, AOC-in-C, for sparing time for conference today, and thank you very much all the officers as well as the media persons, Lieutenant Arora, Lieutenant Colonel Anand, and from the Air Force of Wari Station also. I thank you all of you for extending your coordination. Thank you very much. Thank you. Jai Hind.